discuss one thing that is about the text box control. So what we will do is we will try to scan each and every character, right? Whatever is there, whatever is typed by the user, right? And we will just bifurcate it into a different type of characters, right? For example, how many digits has been entered by the user, or how many spatial symbols, how many space, right, is entered by the user, how many vowels are there. So we'll just do that thing, and then we will do a little bit work on list box control, right? So these two programs mainly we are just focusing today, and then uh, we'll just go ahead with TextPad application. Fine. So first of all, before sharing the screen, I would just like to confirm, may I audible in both the divisions? Yes, sir. Okay, fine, good. Okay, so let me start the thing. And let me open the Visual Studio, right? Okay, so now what will we do is we'll take a new project. So we'll just select the language, that is C Sharp and Windows application, and here we'll just click on OK button. Okay, now see what we have is we have two different type of control. Let's suppose if you want to expect a user will enter some text, right, or text data. So in that case, you have two different type of controls, right? The first control, that is called the text box. So basically, we are taking a text box when we want to take input from the user. Now see, whenever you are taking a text box, your text box looks like this, right? You can yes, you can increase the width of the text box, but you cannot have any option so that you can increase the height of the text box, right? Because this particular text box is basically designed for a single line text. So see here, user can enter a single line text, but suppose if you want to allow user so that he or she can type multiple lines in it, right? So enter, we want to allow. So in that case, you need to set one property, and that property is nothing, it is called multi-line property. So you just select the text box and go to the property, you will get a multi-line property. Fine. So by default, the multi-line property is a false, you just need to make it true. Okay. And suppose if you don't want to go into the property window, then here there is a smart pop-up menu is there. So if you are clicking here again, you will get the option for the multi-line. So if you just do the tick mark here, automatically you can see here the multi-line is now true. And your text box, you can also increase the height of the text box, right? Now your text box will take a multiple lines. So suppose if user want to enter one line, first line, for example, this is my first line. And now suppose if user is pressing enter, then automatically cursor will go to the second line, right? But see, by default, if you are taking a text box, it is just allowing a single line text, right? Unless and until you are not setting this property to true. Fine. So now user can type, say, this is second line, and so on. Okay. Now what we need to do is, this is a multi-line property. Here what we need to do is we need to put a button called analysis, and user will type whatever data he or she want to type.
afterwards, when user is clicking on that analyze button, what we need to do is we need to check each and every character, right? Whatever is typed by the user. So in the data, whatever thing is typed by the user, we just have to check one by one character, and then we are actually having some counter variable. For example, we have the counter variable digits. So if the character, whatever we are taking from this text box, if it is a digit, it is from 0 to 9, then the digit counter will be plus plus, right? So we just have to scan how many spaces are there, how many alphabets are there, in the alphabets how many vowels are there, how many special symbols are there. That thing we just need to count, and we have to show, we have to represent it, right, in the form of message box. So fine, let's go back to our design, and we'll put the button to implement this thing. So let me put this button, and here I'm just changing the text to the analysis. Fine. So when user is clicking on this analysis button, at that time we'll just count the different thing, and we will just show to the user. Okay. Now we just need to double click on this button so that the event will be open, and here we need to write a code, right? So here what actually we need to do is we just need to run a loop, because we have to check each and every character which is entered by the user, right? So I am taking one variable integer I. Fine. And then some other variables I am declaring, for example sp variable, because I want to count how many spaces are there. Fine. Then I, then space, then vowel. Fine. And yeah, one more thing, because we are writing a code into the C sharp, you just need to initialize all the variables, right? So vowels are 0, space are 0, then digits, that is again 0. uh, then suppose alphabets, that is again 0. ठीक है, तो क्या डिजिट आ गया, वॉवेल आ गया, स्पेस आ गया, ठीक है, सब कुछ तो आ गया, राइट? ओके, और भी कुछ है तो यू कैन जस्ट मेक वन मोर वेरिएबल, राइट? Okay, fine. Now what you need to do is you just have to start a for loop. Okay, so I'll just start a for loop. Let for I is equal to 0, right? So I'll just start my loop from I is equal to 0, and then I is less than, we just have to gone through each and every character, right? Whatever is there, whatever is entered by the user into that text box. So I am just writing text box 1, right, dot text. If you are writing text box 1 dot text means what? uh, Here whatever thing is typed by the user, right? Dot length. Okay, so length will gives you how many character is actually typed by the user, right? And I plus plus. Okay, because we'll just start from 0, right? 0 will be a first character, then we will scan, we will go ahead with the second character, we'll check, then third character, then fourth character, then fifth character, will go on and on up unless and until we are not reached at this place, that is length of the text box, right? Length will gives you how many characters are actually entered by the user. Okay, fine. So now what we will do is we'll just open the bracket, and inside the bracket I am declaring one variable character ch. Ch is equal to what? Text box 1 dot text. Now ch is a character variable, so ith character I just want to put it into the ch variable so that I can easily check whether it's a space or it's a vowel or it's a digit or it's a alphabet. Okay, fine. Now I have copied one character. Now see, this is which character? Obviously, when the first iteration will start of the loop, then I will be 0. Then the ith character means 0th character will be placed into the ch variable. Then the loop will run first iteration, right? So I will be a 1, because here we have written I plus plus, so I will becomes 1. Then the second letter, right? Because first letter will be 0, right? Second letter will be 1. So first position, right?
whatever character is there that we are storing into ch, then we are checking, then third letter, then fourth letter, then fifth letter, and your loop will go on and on up to the length. Okay, fine, number of characters. Fine, now I just have to check whether the character whatever we have stored into the ch variable is a space or not. Okay, so I'll just type, say, if ch is equal to say one space, right? If this is the case, then I'll just do the increase sp variable, sp plus plus. Okay, yeah, because this is a space character, so otherwise you need to use a conversion, right? Okay, then else if suppose स्पेस नहीं है, तो क्या है, स्पेस नहीं है तो हम लोग चेक करेंगे डिजिट है या नहीं. ओके, सो फॉर दैट विल राइट कैरेक्टर इज अ क्लास डॉट इज डिजिट इज अ फंक्शन. हमको चेक करना है कि भाई सी एच जो है वो डिजिट है या नहीं, राइट? सो दिस फंक्शन इज, those function which starts from is, they are actually going to return a true or false value, right? So if the ch, right, variable is having any character which is from 0 to 9, and in that case this function will returns true. But suppose if any other character is there, for example a b c d, or capital a b c d, or at the rate, or something like that, in that case this function will return false, right? Okay, so I'm just checking whether the ch contains a digit. If it is, then I'll write, say, digits plus plus, right? Okay, the counter of the digit is increased by 1. Okay, then we'll check one more if condition. Now see, digit is done, space is done. Now we just have to check for the vowels and alphabet. Okay, so first I'll just check for the alphabet. So if it is alpha, so here what I will do is I'll write, say, character class dot is later, right? Is later, it is the function is later, right? And in that I'm passing ch because I want to check whether the ch contains a letter or not. Fine, if this is the case, then here I'm just making a bracket because multiple line I want to write here. Okay, so if it is later, then obviously uh, अल्फा प्लस प्लस. अब देखो लेटर हैं तो फिर एक चीज और भी चेक करनी है कि क्या वो वॉवेल है, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, आई नीड टू चेक फॉर 5 वॉवेल्स, and vowels can be there in upper case as well as a lower case, right? तो मुझे 10 केस चेक करने पड़ेंगे. इट इज समथिंग कैपिटल ए है, ठीक है, वॉवेल. स्मॉल ए है, वॉवेल, राइट? ई है, वॉवेल. तो कुछ भी है, मतलब ई कैपिटल स्मॉल, आई कैपिटल स्मॉल, राइट? तो वो सभी हैं वॉवेल्स. तो अगर मुझे नंबर ऑफ केसेस कम करने हैं तो मैं क्या करूं, मैं सी एच को लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट? सो हियर आई एम अगेन यूजिंग अ कैरेक्टर क्लास डॉट टू लोअर सी एच. तो सी एच जो है अगर अपर केस में भी होगा तो उसको टाइम बिंग हम लोग लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं सी एच वेरिएबल को, ठीक? तो हमको मतलब हमारे केसेस जो हैं वो खाली लोअर केस के लिए ए ई आई ओ यू चेक करना है, राइट? सो फॉर दैट पर्पस इफ ch is equal to small a, right? We don't have to write capital A, right? Similarly, ch is equal to e. Okay, then ch is equal to I, or ch is equal to o, right? Or ch is equal to u, right? A E I O U. Fine. If this is the case, then I'll just increase a vowels plus plus. आप लोगों को ये समझ आया कि मैंने ये लोअर केस में क्यों कन्वर्ट किया? अगर मैं लोअर केस में नहीं कन्वर्ट करता हूँ तो फिर आई नीड टू गो फॉर ऑल द केसेस. कैपिटल ए है तो भी चेक करना पड़ेगा, कैपिटल ई के लिए भी चेक करना पड़ेगा. बट नाउ द कैरेक्टर गेट्स कन्वर्टेड इनटू लोअर केस, सो वी जस्ट हैव टू राइट ऑल द केसेस जो लोअर में अप्लाई होंगे. दैट्स इट. फाइन. ओके, नाउ ये सब हो जाने के बाद ये लूप घूमता रहेगा, फाइन, अनलेस एंड अनटिल सारे के सारे
कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रोसेस ना हो जाए। व्हेन वी आर जस्ट कमिंग आउट ऑफ दिस लूप, मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ str, और उसके अंदर मैंने लिखा कि भाई चलो पहले क्या प्रिंट करें, स्पेसेस। तो स्पेसेस कितने हैं, सो दैट इज प्लस convert dot to string, because my variable is what, it is numerical, right? So I need to convert it into the string because I want to do a concatenation operation. So here say variable name is sp, so sp, fine. Then again plus sign, okay. Now after spaces I want to print digits, okay. So I will give a slash n new line and digits. Now, how many digits are there, that if you want to print, then convert dot to string again to digits variable, fine, plus suppose how many alphabets are there. So slash n, how many letters are there, okay. So letters we are going to print, and for that purpose again convert dot to string, fine. लेटर्स को हमने क्या लिखा है, अल्फा, है ना। what variable name we have used, yeah, alpha plus plus. So here you need to write convert dot to string alpha, okay, fine. Last vowels are there, so I'm just writing plus, then slash n, say vowels, and we'll just convert the vowels variable into the string, so convert dot to string uh, vowels, fine. So this is what the message that I have created into the str variable. Now finally whatever content is there in the str variable that we have to print in the message box, so here we can write a message box dot show, okay, and then str, fine. So whatever thing is there, that is actually in the str variable that we are going to print, that we are going to show in the form of message box, fine. So coding is pretty simple, है ना, it's a very simple, just we need to run a loop, and then the ith character of the text we are just putting it into the ch variable. Then we just have to check whether it is a space or it is a digit or it is a letter. If it is a letter, then there are chances for the vowel. So under that I have placed one more if condition. If the alphabet is a vowel, it belongs to a e i o u, then vowel plus plus. And because I don't want to check all 10 cases, right, so what I have done is I have converted, time being I have converted that particular character into the lower case, so that my case will be reduced from 10 to 5, right. So it's a very simple thing, and here at the end you just have to integrate all the thing into the str variable. Finally you just show that variable on the screen in the form of message box, fine. So now suppose if any user is typing, say I need to take $50 from you, okay. So you can see here, alphabets, so मतलब बहुत सारे हैं, so we cannot count it. स्पेसिस आप काउंट कर सकते हो, डिजिट्स तो 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे, एंड स्पेशल सिंबल में होगा ये डॉट और ये एट द रेट, तो 2 स्पेशल सिंबल्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, बाकी वॉवेल और वो सब तो फिर आप काउंट करना है। इफ यू क्लिक ऑन अ मैसेज बॉक्स, वो बोल रहा है स्पेसेस 6 आपने दिए हैं, डिजिट्स 2 हैं, टोटल लेटर्स 18 हैं, और वॉवेल्स जो हैं वो 9 हैं, राइट। So this is what the question which normally examiners are asking in the university practical examination. So let's suppose if anybody is asking this type of question, then it's very simple to implement. You can easily implement this thing. Okay, now if this is done, do you have any question or query or doubt related to this question? Anyone? If there is no question or queries there, everything is understood, whatever we have implemented, then I'll just go to the next program. Okay, so if you don't have any question, then okay, I'm just adding a new form.
And now we will just try to implement the list box. Okay, so there is one program is there which is frequently asked in the university exam. So right click, add Windows form. I've added one more form. This is form 2. And here what you need to do is, you just need to put two list boxes. So let me increase the font size because I just forgot to increase the font size in the last form. Okay, so here let 14 and let me make it bold. Fine. Okay, हमको इतने बड़े फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, so I'm just reducing the form. Okay, now what you need to do is you just need to take a list box. पहले list box क्या है वो समझ लो. So list box is something here user can not insert the value, user cannot type the value, right? User इसमें type नहीं कर सकता. User को अगर type करना allow करना है, then you take a text box. So text box just allow input. Okay, user can just input the text into the text box. Text box does not allow selection, right? उसमें user select नहीं कर सकता है. Fine. Here when we'll talk about a list box, in the list box user cannot type any value directly, right? User कोई type नहीं कर सकता है. But the thing is user can just select option or options from the list box, right? वो यूजर खाली इसमें से सिलेक्ट कर सकता है. और सपोज आपको ऐसा करना है कि सर यूजर टाइप भी कर सके हम यूजर सिलेक्ट भी कर सके, हाँ, तो उसके लिए है कॉम्बो बॉक्स. Combo box is providing both the feature of text box and list box. Combo box में type भी कर सकेगा user and select भी कर सकेगा. तो selection and input both are allowed. Okay. Fine. So this is my list box. Now in this list box, I want to add some items. So the first way is what you can insert a static item into this. तो आप यहाँ से चले जाओ edit items करके और यहाँ पे सारे अपने items लिख दो. Fine, and then you just click on OK. Otherwise, सपोज आपको ऐसा कुछ करना है कि नहीं सर मुझे तो कोडिंग करके इसमें इंसर्ट करना है. फाइन, तो आप फॉर्म लोड इवेंट पे चले जाओ एंड हियर यू टाइप से list box 1 dot items dot add. Fine, now here we'll just add some of the item. Fine. Okay, now what I'll do is I'll just copy this and I will just paste it for many times. Okay, fine, chalo, we'll just type the name. So some of the cricketers name we have just typed here. Now if user is actually clicking, sorry, let me run this so that we'll just get the idea how our list box looks like. So you just run it and see here you have the multiple thing, right? Okay, now suppose if user if you wish the user will insert some value into the list box. So in that case what you can do is let here you can put a label. Fine, so say okay, then I'll take a text box here. Fine, so here user will type and we will just put a button so that when user is clicking on that button, that item gets inserted. Okay, so fine. And here when the user is clicking on this button, what we need to write, we just need to write the list box 1 dot items dot add which item, whatever is there in the text box. So text box 1 dot text. Fine. So now you have allowed user so that user can also insert the value into the
this list box, right? So let's suppose if I'll type say ABC, so that gets inserted. Let me type XYZ, so that gets inserted, it is here. Fine. Then suppose PQR, okay, so that gets inserted and your list looks like this. Okay, fine. But ये रहेगा नहीं है, that is something let आपने close कर दिया. Again if you run this तो form load पे जितने हैं उतने ही रहेंगे. Okay, fine. तो फिर उसके लिए आपको सेकेंडरी मेमोरी यूज करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू कीप इट परमानेंट देन. ओके, तो वो फिर हम लोग डेटाबेस और वो सब कनेक्टिविटी और वो सब देखेंगे. फाइन. Okay, now what you need to do is in the university exam, most of the time this type of question is asked by the examiner कि आपको क्या करना है, ये जो लिस्ट बॉक्स है यहाँ पे आप कुछ बटन्स रख दो. तो टोटल 6 बटन्स आपको प्लेस करने हैं एंड योर 6 बटन विल बी समथिंग लाइक दिस. लेट मी कॉपी दिस, पेस्ट. So this is button 2, again paste. This is button 3, 4, 5, and one more, right? Okay, so let me move it below and we'll just add one more button. Okay, now here what you need to do, in the text property of first button you just need to write a sign. Okay, that is greater than sign. Then here you need to do double greater than. Okay, and here you need to do triple greater than. Okay, but the thing is, it is not be able to show the triple greater than because the width of the button is, so we are just increasing the width. Okay, fine. Now here the same thing. What you need to do is you have to show less than. Again here one more double less than, and here triple less than. Okay. Now you copy this list and paste it here. So this will be your list box 2. Okay, now what we have to do is when the user is selecting any of the item, right, from this first list box, and when the user is clicking on this button, that particular item which is selected by the user, that has to be moved from this first list box to second list box, right? Okay, are you getting my point? User will select any one item from the list box 1, and when the user is clicking on the first button at that time, that item which is selected by the user in the list box 1, you have to move it from first list box to second list box. What it means, suppose if I have selected this Rahul and if I'm clicking on this button, Rahul has to be inserted into the list box 2. Not only that, that Rahul has to be deleted from the list box 1. Okay, so for that purpose, what we need to do here, we need to write code. So see, insertion is quite simple. It is something like list box 2. List box 2 में add करना है ना, तो list box 2 dot items dot add which item you want to move it. You want to add it to list box 2. List box 1 dot selected item. Make sure it is selected item, not items. Fine. Okay, and this will done. This will be, it will do the thing. For example, if I'm selecting Dhawan and if I'm just clicking on this, so you will get Dhawan here. Fine, but we have to move it. Means now the Dhawan should not be there in the list box 1. Okay, so for that purpose, now whatever item we have copied into the list box 2, that same item we need to delete from the list box 1. So here list box 1 dot items dot remove, right? Which item you want to remove? Whatever is selected by the user, right? So list box 1 dot selected item. Okay, so if you do this, user will just select it, and if user is clicking on this button, so that gets moved, then this one. Fine. Okay, but here, problem occurs if user is not selecting anything, right? If user is not selecting anything, and suppose if user is clicking on this button, then okay, huh,
It is giving an error. So what we need to do is we just have to protect our code, right? So control X, I'll just check if listbox1 dot selected items dot count, if it is greater than 0, what it mean, अगर जो आइटम्स जो हैं उसको हम लोग काउंट करते हैं कितने आइटम सेलेक्ट किए हैं, राइट? सेलेक्टेड आइटम्स डॉट काउंट, मेक श्योर यहाँ पे मैंने जो वर्ड यूज किया वो आइटम्स है, राइट? आइटम्स के साथ ही काउंट आएगा। आइटम का मतलब ये हो गया कि सिलेक्टेड आइटम मतलब वन आइटम, ओके? तो उसमें काउंट कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू काउंट हाउ मेनी आइटम्स आर एक्चुअली सिलेक्टेड। अगर यूजर ने एक आइटम सिलेक्ट किए है तो इट्स ओके, इट विल गिव्स वन, बट सी वन आइटम भी सिलेक्टेड है तो इट इज ग्रेटर देन जीरो, फाइन, इट इज ग्रेटर देन जीरो, ओके? एंड इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो देन आवर कोड हैज टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक? तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दिस, फाइन। तो अगर यूजर ने कुछ सेलेक्ट करा है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स, देन एंड देन यू नो दैट आइटम गेट्स मूव्ड इनटू द लिस्ट बॉक्स 2। इफ यूजर हैज नॉट सिलेक्टेड एनी ऑफ द आइटम इन द लिस्ट बॉक्स 1, तो पहले जो एरर आता था वो अब नहीं आएगा, हाँ कुछ होगा भी नहीं। हाँ अगर आपको कुछ मैसेज देना है तो यहाँ पे एल्स में जाके फिर आप लिख दो, है ना, कि प्लीज सिलेक्ट एनी आइटम फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स 1। Okay, so now suppose if user is not selecting anything and suppose user is just clicking on this, then this message will be appeared, please select any item from list box 1. And suppose if your user is selecting any of the item and then suppose user is clicking here, then no message box will be there, that item will be moved straight forward. Okay, fine. So now I'll just close this. Okay, now you people might think कि सर ये तो एक बटन हो गया, राइट? आपने तो 6 बटन लगाए यहाँ पे, तो बाकी के बटन किस काम के हैं? तो see, when we are running this application, user can select only one item from this list box, because by default there is one setting is there in the list box that user can select only one item. But if you wish to change that setting and if you wish to allow so that the user can select multiple items, then it is possible. Okay, so now what we need to do, I'm just selecting this list box and I want to allow user so that user can select multiple items. Okay, so here there is one property is there which is called selection mode, right? So in the selection mode by default it is 1, right? Here there are several options are there. If you set none, then user cannot be able to select any item, right? 1 means user can select only one item, and multi simple is somewhat like this, fine. Now user, if user want to select मल्टीपल आइटम्स, तो उसके पास दो ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मुझे राहुल से लेके देखो ये अपने आप से सिलेक्ट हो जा रहा है, फाइन, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट प्रेसिंग एनी की। मैं अच्छा उसको डी सिलेक्ट करना है तो आप उसके ऊपर फिर से क्लिक कर दो तो वो डी सिलेक्ट हो जाएगा, राइट? इन दिस वे यू कैन सेलेक्ट। तो आप क्लिक करते जाओ, दैट आइटम गेट सिलेक्टेड। सिलेक्टेड आइटम पे दोबारा क्लिक करोगे तो वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। इट इज समथिंग लाइक दिस। और सपोज आपको ऐसा करना है कि नहीं सर, वो कंट्रोल और शिफ्ट को लेके हमको चलना है, तो आप मल्टी एक्सटेंडेड कर दो। मल्टी एक्सटेंडेड के अंदर क्या होगा देखो, अगर आप सिंपल राहुल क्लिक किया एंड सपोज कुछ कोई बटन प्रेस नहीं कर रहे हो, आप पंथ को सिलेक्ट कर रहे हो, तो राहुल डी सिलेक्ट हो रहा है, राइट? अच्छा, मल्टीपल आइटम सिलेक्ट करने हैं, तो फॉर एग्जांपल मुझे राहुल से लेके कोहली तक सब खिलाड़ी को सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट दबा के सीधा लास्ट आइटम को सिलेक्ट कर दो। शिफ्ट वो पूरा का पूरा रेंज सिलेक्ट कर देगा। और आपको ऐसा लगे कि सर मुझे पहले श्रेयस को सिलेक्ट करना है, फिर धवन को, फिर कोहली को, हाँ तो पहले श्रेयस, अब कंट्रोल की को होल्ड करके रखो, फिर धवन पे क्लिक करो, फिर कोहली पे क्लिक करो, राइट? जो जो आइटम्स आपको चाहिए रैंडम आइटम्स, वो उसके ऊपर आप क्लिक करते जाओ कंट्रोल से, ठीक, लाइक दिस। ओके, बट कंट्रोल की को आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, राइट? सो ये प्रॉपर्टी है।
ठीक है, तो आपको जो रखना है, मल्टी सिंपल रखो या मल्टी एक्सटेंडेड, इट इज अप टू यू, राइट। मल्टी एक्सटेंडेड में शिफ्ट और कंट्रोल की से सिलेक्शन होगा मल्टीपल, और मल्टी सिंपल में आपको कंट्रोल या शिफ्ट की को यूज करने की जरूरत नहीं है। आप जहां जहां क्लिक करते जाओगे वो आइटम सिलेक्ट होती जाएगी। सिलेक्टेड आइटम को अनसिलेक्ट करना है तो फिर से उसके ऊपर क्लिक करो, नो नीड टू प्रेस कंट्रोल की और शिफ्ट की। ओके, अब यूजर यहाँ पे मल्टीपल आइटम सिलेक्ट कर रहा है, फाइन। सो मैंने सपोज राहुल सिलेक्ट किया, फिर पंत, फिर कोहली, अब इतने आइटम्स को मुझे मूव करना है, ठीक। तो यूजर ये सेकंड बटन प्रेस करेगा, फाइन। तो जितने भी सिलेक्टेड आइटम्स हैं वो सारे के सारे आइटम मूव हो जाएंगे फ्रॉम लिस्ट बॉक्स 1 टू लिस्ट बॉक्स 2, ठीक। ओके, अब कैसे करेंगे? हाँ, तो लेट मी टेक अ वेरिएबल इंटीजर आई, यहाँ पे भी लूप घुमाना होगा, और एन वेरिएबल हमने लिया। एन के अंदर हम लोग पहले ये डाल दें कि हाउ मेनी आइटम्स हैज बीन सिलेक्टेड बाय द यूजर, राइट। सो कैसे हम लोग को पता चलेगा हाउ मेनी आइटम्स हैज बीन सिलेक्टेड बाय द यूजर? So listbox1 dot selected items dot count. Already we have used it, this property. Fine. Okay. अब मुझे लूप चलाना है। For I is equal to 0, I less than n, I plus plus, जितने भी सिलेक्टेड आइटम्स हैं उसी को मुझे मूव करना है। मेक श्योर यहाँ पे भी मैंने सिलेक्टेड आइटम्स लिखा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी आइटम्स यूजर ने सिलेक्ट की हो सकती है, ठीक। मल्टीपल सिलेक्शन इज देयर। ओके, तो ये कर दिया हमने। अब क्या करना है? सिंपल वही वाली बात, जो आइटम यूजर ने सिलेक्ट करी है उसको कॉपी कर लो लिस्ट बॉक्स 2 में, और उसको फिर लिस्ट बॉक्स 1 से डिलीट कर दो। तो हम लोग लिखेंगे लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट एड, कौन सी आइटम, सॉरी, लिस्ट बॉक्स 2 में ऐड करना है। सो लिस्ट बॉक्स 2 डॉट आइटम्स डॉट एड, कौन सी आइटम? लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स, not items, selected items of I, ठीक। ओके, अब ये आइटम को लिस्ट बॉक्स 1 में से डिलीट भी करना है। सो व्हाट यू नीड टू राइट, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट रिमूव, which item? So specify the item here. So list box 1 dot 1 dot selected items of I. Now is this code is okay? Fine, सही है ये स्टूडेंट्स? चलेगा या नहीं चलेगा, या कुछ गलती है? व्हाट यू थिंक ऑन द कोड? दिस इज द कोड आई हैव रिटर्न। फाइन, क्या किया? आई हैव टेकन टू वेरिएबल, एक तो लूप चलाना है तो आई वेरिएबल, सेकंड हाउ मेनी आइटम्स आर सिलेक्टेड इन द लिस्ट बॉक्स 1, तो उसके लिए मैंने काउंटर एक ले लिया एन। एन के अंदर हमने क्या रखा? हाउ मेनी आइटम्स आर सिलेक्टेड बाय द यूजर, तो 3 आइटम्स है तो 3 कर दिया हमने, ठीक। और फिर हमने आई वेरिएबल स्टार्ट किया, आई 0 से लेके 3 तक जाएगा। पहला सिलेक्टेड आइटम कॉपी किया, फाइन, उसको डिलीट किया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। इज द कोड इज राइट? चलो भाई, प्रोग्रामर हो आप लोग, बोलो। रन करूं? नहीं पता चल रहा है? See, actually, this will not work. Okay, why? Because the thing is, आप आइटम को रिमूव भी करते जाते हैं, है ना, तो ये 1 2 3 फिर नहीं रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पे आइटम्स रिमूव आप कर रहे हो, तो जैसे कि एक आइटम रिमूव हो गया तो फिर काउंटर जो है वो चेंज हो रहा है, फाइन। तो यहाँ पे आपको लिखना है 0, ठीक। 0 मतलब पहला जो आइटम सिलेक्ट किया है उसको कॉपी करो और फिर वही आइटम को डिलीट कर दो, तो अब जो दूसरा आइटम है वो 0 पे आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, चलो आराम से सोचना, फिर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे मतलब बात करना, है ना। ठीक, तो चलो आई एम जस्ट सिलेक्टिंग सम ऑफ द आइटम्स, फाइन, एंड दिस इज डन। ओके, फाइन। नाउ
थर्ड। आप सोच रहे हैं कि सर तीसरा किस लिए रखा है? तीसरा इसलिए रखा है कि अगर सब के सब जितने भी लिस्ट बॉक्स में है, देखना नहीं है, सिलेक्ट नहीं होना है, राइट? सारे के सारे आइटम हमको मूव कर देना। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इंटीजर आई और एन। अब एन में क्या होगा? सारे के सारे आइटम। यहाँ इसकी बात नहीं हो रही है कितने आइटम सिलेक्ट किए हैं। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? सो लिस्ट बॉक्स वन, सिलेक्टेड आइटम्स नहीं, सिर्फ आइटम्स जितने भी हैं, राइट? डॉट काउंट, that is the first thing. Second, you need to run a loop for I is equal to 0, I less than n, I plus plus. Okay, and then what we need to do is list box 2 dot items dot add कौन सा? list box 1 dot items of 0। कि आप ऐड करोगे तो फर्स्ट आइटम कॉपी किया आपने, फिर फर्स्ट आइटम को डिलीट कर देते हो। आई गेटिंग माय पॉइंट? डिलीट करते हो तो सेकंड आइटम है वही आपका फर्स्ट आइटम हो जाएगा, तो उसको कॉपी करने के लिए वापस आपको 0 ही लिखना पड़ेगा। फाइन, सो लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट रिमूव which one, list box 1 dot items 0। फाइन, एंड द थिंग इज डन। ओके, हाँ, अगर यहाँ पे आपको ये नहीं करना है तो आप दूसरा भी कोड लिख सकते हो। आई विल जस्ट शो यू दैट कोड टू। So if you run this and if you are clicking on this button, see entire list gets shifted from list box 1 to list box 2. If you don't want to write like this, so I'll just make it comment। रिमूव हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं, हम लोग पहले सारा का सारा पूरा का पूरा लिस्ट बॉक्स 1 है उसको कॉपी करते हैं, फर्स्ट आइटम सेकंड आइटम। देखो अभी हम लोग रिमूव नहीं कर रहे हैं, रिमूव नहीं कर रहे हैं तो आपको आई लिखना पड़ेगा, 0 से नहीं चलेगा, राइट? आई मतलब 0th आइटम, देन फर्स्ट आइटम, देन सेकंड आइटम, एंड तो ये सब कॉपी कर लेगा। पूरा का पूरा लिस्ट बॉक्स है उसको मतलब लिस्ट बॉक्स 1 है उसको लिस्ट बॉक्स 2 में कॉपी कर लेगा। एंड लास्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भाई लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट क्लियर। फाइन, सो क्लियर मेथड को कॉल करो एंड यू विल हैव नथिंग इन द लिस्ट बॉक्स 1। हाँ, so if you just click on this, you are getting the same thing। okay,